है आप लोगों ने. So how would we make hydrogen bonding between two molecules of ethanol? Ethanol has a formula C2H5OH, right? So ethanol has a hydrogen atom directly bonded with the oxygen atom, right? So we have to show the lone pairs on the oxygen atoms. If you want to draw the shape, that's okay. If you want to make a perfect bond angle, that would be okay. But if you just want to show a bonded pair and lone pairs above and below oxygen, because right now we are not drawing the shape of a molecule, we are just drawing the structure, so that would be acceptable. So if we have two ethanol molecules, then we know that oxygen must have a partial negative charge, right? Both of these oxygen will have a partial negative charge and a hydrogen will have a partial positive charge. And the hydrogen bond is made from the lone pair of oxygen to the partial positive of hydrogen of the other molecule. That's how you would make the hydrogen bond between two ethanol molecules, right? And what about a molecule of water and a molecule of methanol? So if you see, for a molecule of water, we have two hydrogen atoms, lone pair on the oxygen atoms if you want to draw one, and oxygen will have a partial negative charge. And make sure you always draw the partial charges over both the hydrogen atoms. You have to show all the partial positive charges. Right now, we were just supposed to show the partial charges on the oxygen and hydrogen. In case of methanol, methanol has a formula CH3OH. If you draw this CH3, and I think right now you are just not used to make the formula like this, you just make it like this. Okay. So both of these oxygen will have a lone pair. You have to show these lone pairs. You have to show the partial charges over the oxygen and the hydrogen. Now we know that a lone pair on the oxygen atom will attract the partial positive of hydrogen. It can be both, it can be drawn in both the ways. Like if you want to draw another water molecule, the oxygen's lone pair of the water molecule will also be attracting or making a hydrogen bond with the partial positive of methanol molecule. That's another way to draw a hydrogen bond between water and methanol, right? A lone pair on the oxygen of the methanol can also make a hydrogen bond with the partial positive of hydrogen from water molecule. Similarly, lone pair on the oxygen of water molecule can also make a hydrogen with the partial positive of methanol molecule. Oh yes, Ramin, if you have drawn a hydrogen bond from the partial negative of oxygen to, let's say this was partial negative of oxygen. If you have drawn a hydrogen bond from a lone pair of oxygen to the partial positive of hydrogen, that is also okay. If you just want to draw both the bonds, that would be acceptable too. Got it? Okay, moving on. The last one is ammonia in water. So for ammonia molecule, we have three hydrogen atoms bonded to ammonia, and a nitrogen has a lone pair, and the partial negative charge would be on the nitrogen and the partial positive charges would be on hydrogen. Now for water molecule, let's say if we just make a water molecule like this, it's okay if you do not want to make a perfect bond angles, because right now we are not drawing the shapes, we are just interested in the hydrogen bond. So the lone pair on the nitrogen atom will be making a hydrogen bond with the partial positive hydrogen on the water molecule. If you just want to draw it like this, let's say if I just draw another ammonia molecule adjacent to this water molecule, then you can also show the hydrogen bond from the lone pair of oxygen in a water molecule to the partial positive of hydrogen on an ammonia molecule. That's fine too. ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें.
जरूरी है सब पर वो निशान बनाना, पार्शियल चार्ज कहते हैं इसको। देखो, इन दी मार्किंग की ही एक्सपेक्ट्स यू टू मेक एट लीस्ट पार्शियल चार्जेस ऑन two of the bonded atoms. Like if we have two water molecules, he expects that you draw all the partial charges on all the atoms in at least one molecule. But I would recommend, do not take risk for anything. You draw all the partial charges. As much as the partial charges are present, you should draw all. बेस्ट है कि आप वो सारे बनाओ। ठीक है। अच्छा भाई, chemical bonding was the land is the largest topic of AS chemistry. So we have covered so many subtopics in chemical bonding. I'm just writing it down. You guys have to tell me if you remember everything that we have discussed so far. HB is hydrogen bond. Short form लिखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को कह रहा हूँ HB। हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। चलें अहमद आगे। अच्छा, we started off this chapter from the revision from O level, right? को हमने सबसे पहले बॉन्डिंग के चैप्टर में डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स रिकॉल किए थे। we recall dot and cross diagrams for ionic compounds। अभी भी बनवाता है एएस में, आपको आने चाहिए। Then we practice dot and cross diagram of covalent molecules, simple covalent molecules that we used to make in back in grade 11, right? Then we studied about the physical properties of ionic compounds and covalent molecules, simple covalent molecules. They have low melting and boiling points because of weak intermolecular forces between the molecules, right? And we also have to discuss about the physical properties of metals, exactly the same that we studied in grade 11। तो वो अभी हमने मेटालिक बॉन्डिंग वगैरह रिकॉल मैं अभी करवा देता हूँ, आपको 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद हमने डिफाइंग ऑक्टेट रूल पढ़ा था, जो नया काम आया हमारा, जिसमें हमने SF6 PCl5 वगैरह की बॉन्डिंग देखी थी। दैट नाउ द एटम्स कैन हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, जो कि ऑक्टेट रूल डिफाई कर रहा है। उसके बाद हमने डेटिव बॉन्डिंग, और विच इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वो देखा था। ठीक है। फिर हमने ऑर्बिटल ओवरलैप देखा था, सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज एंड बॉन्ड एंगल्स। देन वी स्टडीड अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन की तो डिटेल में पता थी, नाइट्रोजन की भी बस याद होनी चाहिए कि कब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, कब sp2 होगा, कब sp होगा। और उसके फिर ओवरलैप, ऑर्बिटल ओवरलैप भी देखे थे। राइट, डायपोल मोमेंट्स पढ़ा था, डायपोल मोमेंट्स पहले पढ़ा था, बट फाइनली वी स्टडीड अबाउट इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है। फ्री रेडिकल भी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में होता है वैसे तो, लेकिन हमने यहाँ देखा था एनी स्पीशी दैट हैज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लाइक CH3 के ऊपर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है कार्बन का, एक बॉन्ड कम होता है, तो वो फ्री रेडिकल है।
ठीक है, फिर हमने इस तरह से मॉलिक्यूलर आयन भी देखे थे, इनके भी बॉन्ड एंगल्स देखे थे। ठीक है। सबसे मुश्किल तो नहीं था अहमद, बट इट इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट टॉपिक ऑफ एएस केमिस्ट्री। अच्छा, मेटालिक बॉन्डिंग और हम जरा देख लेते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग, आई होप आप लोगों को आइडिया तो होगा मेटालिक बॉन्डिंग का। जैसे आपने ग्रेड 11 में पढ़ा था, एग्जैक्टली बिल्कुल वही मेटालिक बॉन्डिंग आपके पास यहाँ भी है। वी हैव metallic lattice, a giant metallic lattice where we have metal regularly arranged layers of metal positive ions surrounded by sea of delocalized electrons. ठीक है। if I ask you to make a metallic lattice, तो बना लेंगे आप लोग मेटालिक लैटिस? करवा देते हैं रिवाइज। अच्छा, मेटालिक बॉन्डिंग में हाउ वुड यू डिफाइन मेटालिक बॉन्डिंग? metallic bonding is when we have a metallic lattice where we have regularly arranged layers of metal positive ions in a metallic bonding. Regularly arranged layers of metal positive ions surrounded by sea of delocalized electrons. And how would you draw a metallic lattice? You have to make these regularly arranged metal positive ion layers. At least draw 4 metal positive ions and at least draw 3 layers of these metal positive ions. And when you have to draw the electrons, make sure these electrons are haphazard. मतलब कुछ ऊपर कुछ नीचे, एक straight line में नहीं बनाने होते. And always make a label diagram, sea of delocalized electrons, and these are known as metal positive ions. And the regular arrangement of anything is known as lattice. So यहाँ पे एक regular arrangement है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं this is a metallic lattice. ठीक है जी। अब चाहे कोई भी मेटल हो ना, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, व्हाटएवर, द मेटालिक लैटिस हैज टू बी ड्रॉन इन अ सिमिलर वे। मतलब मेटालिक लैटिस सबका एक जैसा ही बनेगा इस तरह से। Then properties of metals. Metals are good conductor of electricity. Why? Because they have sea of delocalized electrons or free electrons or mobile electrons. Whenever you connect a battery across a metallic lattice, the electrons from the negative terminal of a battery will move towards the metallic lattice. They will push these mobile electrons or the sea of delocalized electrons towards the positive terminal. That's why, because these electrons can move within the metallic lattice. That's why the metal can conduct electricity. ठीक है। and flow of electron is electricity, सबको पता है। and whenever a metallic lattice conduct electricity, the electrons are replaced by new electrons, but the positive ions or metal positive ions, they stay in their position, so they stays unchanged. Then the second physical property of metals was metals have high melting and boiling points. And I do not need to explain to you what melting and boiling is. That this particular file is basically from O level, तो उसको उनको पहले ना solid liquid gas भी बताना पड़ता है। तो melting is a change of state from solid to liquid at a constant temperature known as its melting point. Boiling, you guys know, it's liquid to gas at a constant temperature known as its boiling point. And why metals have a high melting point? Because metals have a giant metallic lattice. So huge amount of energy or more heat energy is required to break many strong metallic bonds.
In fact, you can also write many strong electrostatic forces of attraction. But even if you have written many strong metallic bonds, that would be acceptable too. And metals are malleable and ductile. Why? Because metals layers, they can slide over one another. So malleability is the ability of metals to be hammered into different shapes, and ductility is the ability of metals to be stretched into wires. याद है ना ये सब कुछ? Because when we apply a force on a metallic layer, we know that this metal positive ion layer will slide over one another, क्योंकि ये रेगुलरली अरेंज्ड है ना. लेकिन इनके बीच में जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो ब्रेक नहीं होगी. कब तक ब्रेक नहीं होगी? जब तक आप इस लेयर को पुश करके इतना आगे ना कर दें कि इनके बीच में से जो सी ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है वो उनको रोक ही ना सके. मतलब इसके लेयर के ऊपर चली जाएगी तो ऑब्वियसली एक पॉइंट पे आके मेटल ब्रेक हो गई. So why pure metals are malleable and ductile? Because metal positive ion layers are regularly arranged which slide over one another when force is applied. ठीक है? But in daily life, we see that metals are not that malleable and ductile. Metals are known for their strength and hardness, because in daily life around us, we are not using the pure metals. We are using metals in the alloy form. And alloy is when we mix a metal with another metal or a metal with a non-metal. And why we are doing it? Because we want to make these layers irregularly arranged, so they cannot slide over one another that easily. Because if we mix two atoms of different sizes in a metal, what happens that these metal positive ion layers will become irregularly arranged. So when we're going to apply force on one of the layers, these layers will experience hindrance from this atom, जिसकी वजह से these layers won't slide over one another that easily, and the metal will become less malleable and ductile, right? So in example of alloys, we have brass, which is the alloy of copper and zinc, and we have a very famous alloy of iron, which is steel. We have different variants of steel. Like if we mix carbon in iron, we will get mild steel. If we mix chromium and nickel in iron, we will get stainless steel. You're not supposed to remember this now, but just you should be able to realize what alloys are. Alloys are the mixture of a metal with another metal or a metal with a non-metal. ठीक हो गया? नो, स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट नहीं हुआ समरा. बस ये मैं मेटालिक बॉन्डिंग रिकॉल करवा रहा था कि मेटालिक बॉन्डिंग होती क्या है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेपर 2 ऑफ दिस. चलो भाई स्टार्ट करें क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया था क्लास नोट्स में. एक्सप्लेन sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो ये क्या होता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन कम होता है when one s orbital and two p orbitals combine together, they form sp2 hybrid orbitals, and that is known as sp2 hybridization. Similarly, what is sp3 hybridization? When one s and three p orbitals combine together, they form sp3 hybrid orbital, and the process is known as sp3 hybridization. sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल्स क्या होते हैं कार्बन के साथ? देखो ये सब आपको याद रखना है. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 109.5 डिग्री. द शेप अराउंड कार्बन एटम मस्ट बी अ टेट्राहेड्रल शेप. sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 120 डिग्री होते हैं और sp हाइब्रिडाइजेशन में 180 डिग्री होते हैं. द शेप अराउंड कार्बन मस्ट बी अ लीनियर शेप. ठीक है जी, ये हमने पहले भी कर लिया था क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट कंप्लीट द टेबल द नेम एंड द टाइप ऑफ बॉन्डिंग फाउंड इन ईच क्रिस्टलाइन सॉलिड, द टाइप ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर फॉर ईच क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है जी. कॉपर, कॉपर में हमारे पास मेटल है तो टाइप ऑफ बॉन्डिंग क्या होगी? इट शुड बी मेटालिक. और जो टाइप ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर होगा वो जाइंट मेटालिक है. जाइंट मेटालिक लैटिस होता है ना, तो लैटिस तो उसने ऊपर लिख दिया. यू कैन जस्ट राइट जाइंट मेटालिक.
आइस ऑफ कोर्स वाटर मॉलिक्यूल है, कोवलेंट बॉन्डिंग है। और जो स्ट्रक्चर है हमारे पास आइस का वो सिंपल मॉलिक्यूलर है। सिलिकॉन 4 ऑक्साइड अगेन इज अ कोवलेंट मॉलिक्यूल, जो कि हमारे पास जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है, या मैक्रो मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं इसको। या इसको जाइंट, देखो ऊपर वाले को सिंपल मॉलिक्यूलर बोला है तो इसको जाइंट मॉलिक्यूलर भी कह सकते हो, और इसको हम जाइंट कोवलेंट या मैक्रो मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। अच्छा, ये हम कहाँ पढ़ेंगे? ये हम स्टेट्स ऑफ मैटर में रिवाइज करेंगे, ये भी ग्रेड 11 वाला ही है, कुछ न्यू नहीं है इसमें। आयोडीन अगेन अ कोवलेंट मॉलिक्यूल, और स्ट्रक्चर क्या है आयोडीन का? सिंपल मॉलिक्यूलर। जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स हमारे पास अभी भी वही हैं जो पहले थे, स्टेट्स ऑफ मैटर में देखेंगे डायमंड है, ग्रेफाइट एंड सिलिका। और मेटेलिक बॉन्डिंग बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर में कवर होती है, लेकिन क्वेश्चन जिसके बॉन्डिंग में आपको उसके साथ मिलेंगे, इसलिए मेटेलिक बॉन्डिंग बता दिया। सोडियम क्लोराइड अगेन आयनिक कंपाउंड, एंड दिस इज जाइंट आयोनिक लैटिस। ठीक है, क्वेश्चन लाइक दीज आर वेरी इजी, 5 मार्क्स का था। नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इन आइस। He is saying about the strongest type. If we see two water molecules in ice will have a वेंडरवॉल्स फोर्स, मतलब आईडी भी होगा, पीडी भी होगा, लेकिन देर इज अ सब टाइप ऑफ पीडी जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप की होती है, तो बाकी इंसिग्निफिकेंट है। तो वी विल राइट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दिस। क्लियर है? आगे बढ़े। ड्रॉ fully labeled diagram of two water molecules in ice showing the force in one and how it forms। तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी प्रैक्टिस की। You have to draw at least two water molecules. If you want to draw more than two, that's up to you, but the minimum requirement is for two water molecules. Now in this question, if you do not draw the lone pair on the oxygen atom, you will lose mark. If you do not draw the partial charges on the oxygen and hydrogen atom, you will lose mark. You have to draw these partial charges and the lone pairs on at least one water molecule. बट आई वुड रिकमेंड कि आप दोनों पे बना देना, कितना टाइम जाया हो जाएगा आपका। ऑक्सीजन के लोन पेयर से हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव तक, द लाइंस यू गोना ड्रॉ वुड रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन बॉन्ड। इट्स बेटर इफ यू लेबल इट एज वेल, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। Yes, Mantasha, it would be wrong if you have written PD forces over here. Why? Because he is asking you about the strongest type of intermolecular force in ice. Ice is made up of water molecule. Water molecule, every simple covalent molecule has ID intermolecular force. Check. Every oxygen and hydrogen has a good electronegativity difference between them. So they would have PD as well. However, they would have hydrogen bonding as well, and the strongest type is hydrogen bonding. Even if you have written PD, that would be wrong. Although they have all these three types of forces, but the strongest one is hydrogen bonding. And he was asking about intermolecular force. बच्चे कभी कभार कोवलेंट बॉन्ड लिख देते हैं इसमें कि स्ट्रॉन्गेस्ट तो कोवलेंट है, लेकिन कोवलेंट इज नॉट अ इंटरमोलिकुलर फोर्स। गॉट इट? Okay. Question 3 says hydrogen halides are compound formed when halogens. Halogens are group 17 elements, fluorine, chlorine, bromine. And hydrogen halide is a compound of halogen with hydrogen, like hydrogen fluoride, hydrogen chloride, hydrogen bromide, hydrogen iodide. They have given you the boiling points of all the hydrogen halides and also the bond energy of hydrogen halides. Bond energy you're gonna study in energetics, but from the knowledge of grade 11, if you recall the topic energetics, उसमें भी तो पढ़ा था ना? If you can see, hydrogen fluoride has a very high bond energy as compared to hydrogen chloride and hydrogen bromide and hydrogen iodide. It means as we are going further down the group 17, hydrogen chloride has a weaker bond length as compared to hydrogen fluoride. Hydrogen bromide has even weaker further bond length. Bond strength weak होने का reason क्या है? Because their bond length is increasing. And always remember, longer the bond, weaker the bond. ये हमने पढ़ना है अभी आगे, बट क्वेश्चन तो मिक्स होके आता है ना। तो अभी अगर आपको ये बात याद हो जाए तो अच्छी बात है।
And why the bond length is increasing going down the series? Because fluorine has a smaller atomic size, chlorine has a larger atomic size because it has more number of shells. Iodine has even a larger atomic size because of more number of shells. So when the bonded atoms nuclei are very far apart from each other, the bond length would be weak. Bond length would be longer and the bond strength would be weaker. Or secondly, if you want to explain it into those terms that the electronegativity is also decreasing down the group. ठीक है? अच्छा फिलहाल इस क्वेश्चन में is asking you to explain the meaning of the term bond polarity. Bond polarity is when we have two bonded atoms with the electronegativity difference between them, जिसकी वजह से दोनों bonded atoms पे एक dipole आता है, and that presence of dipole on two bonded atoms is a bond polarity. तो कैसे लिखोगे? When two bonded atoms with electronegativity difference between them are bonded, atoms have partial positive and partial negative charges which can also be said as dipoles. ठीक है? As electrons या shared pair of electrons as shared pair of electrons is not in the center of the bonded atoms, because shared pair of electron is more nearer to the more electronegative element. That's why they have dipoles, and that dipole is bond polarity. ब्रोमाइड का और बड़ा होगा ऑब्वियसली, आयोडाइड का और बड़ा होगा। अहमद, मैंने बोला नहीं था, मैं डायरेक्ट जंप करके आयोडीन पे आ गया था। Part 2 says suggests why the boiling point of hydrogen fluoride is much higher than the boiling point of the other hydrogen halide for 2 marks. Now hydrogen fluoride, we know that hydrogen fluoride molecules have hydrogen bond between them. If you recall that graph where we made the trend of boiling points of group 17 hydrogen halides, hydrogen fluoride has an exceptionally higher boiling point as compared to other hydrogen halides. However, as we move from hydrogen chloride to hydrogen bromide, there is an increase in boiling points. And the reason being because as we move from chlorine to iodine, when the ID-ID forces increases. And why ID-ID forces increases? Because number of electrons increases. Iodine has more number of electrons as compared to bromine. But hydrogen fluoride, despite having the least number of electrons, still its boiling point is much higher as compared to other hydrogen halide because it has a very special type of intermolecular force which is hydrogen bond. तो क्या लिखोगे इसमें? Hydrogen fluoride molecules have hydrogen bonds between them, right? Which is the strongest? No, HCl and HBr does not have hydrogen bond. Hydrogen bonding only happens when hydrogen atom is directly covalently bonded with either nitrogen, oxygen or fluorine. Hydrogen bonding तो इन तीनों के साथ होता है ना, when hydrogen atom is directly bonded with either nitrogen, oxygen or fluorine. The hydrogen bond is the strongest type of intermolecular force of attraction.
So more, you have to mention this, more heat energy is required to break these forces as other hydrogen halides have only permanent dipole, परमानेंट डायपोल, या आप ना भी लिखो तो आपको मार्क्स तो मिल गए, ठीक है। अदरवाइज आई वाज जस्ट ट्राइंग टू राइट कि ऑल अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स हैव ओनली परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस, जिसको मैं पीडी लिख रहा हूं, एंड आईडी फोर्सेस। बट आई वुड रिकमेंड कि यू जस्ट राइट द फुल नेम ऑफ इट इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू राइट इट। बाकी में पीडी और आईडी दोनों है। आगे बढ़े। मूविंग ऑन। Okay, this is a good question. A molecule of hydrogen cyanide is shown. The bonding between the carbon and nitrogen atom consists of one sigma bond and one pi bond. If we have a triple covalent bond between two of the bonded atoms, one of the bonds should be a sigma bond, the other bonds are pi bond. The first bond between any two bonded atom is always a sigma bond. The rest of the other bonds are always pi bond. So you have to sketch the shape of a sigma bond and one of the pi bonds in the space below. तो सिग्मा बॉन्ड इज इजी बिकॉज सिग्मा बॉन्ड की जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट, बट वी हैव टू कंसिडर द हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, because carbon, if it is making two bonded pairs, here carbon is making two bonded pair and zero lone pair, it means the shape of a carbon is linear, and when the carbon is linear it means carbon must have been sp hybridized. ठीक है, तो कार्बन जो है वो sp hybridized हुआ हुआ है। तो कार्बन जब sp हाइब्रिडाइज्ड होता है तो उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे लुक समथिंग लाइक दिस, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, राइट। एंड नाइट्रोजन हैज ओनली वन बॉन्डेड पेयर एंड वन लोन पेयर। नाइट्रोजन जब वन बॉन्डेड पेयर वन लोन पेयर होता है तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। नाइट्रोजन का हमने शेप तो नहीं बनाना है, बट आप किस तरह से बना सकते हो, आपने पहली बात तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनाना है बिटवीन दी कार्बन एंड नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन का नहीं है ये, ठीक है। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि भाई कार्बन जो है वो sp है, और नाइट्रोजन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो हमने नहीं बनाए, लेकिन नाइट्रोजन का मुझे पता है कि नाइट्रोजन का अगर मैं एटॉमिक नंबर देखूं ना तो इट इज 7, 1s2, 2s2, 2p3। तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के हैं वो p सब शेल में ही है, 1, 2, 3। So if nitrogen is going to make a covalent bond with a carbon atom, so even if nitrogen is getting hybridized, so उसके पास S है और P है टू ज्वाइन टुगेदर, लेकिन नाइट्रोजन का जब देखो हमने ये याद किया हुआ है कि कार्बन के जब 4 बॉन्डेड पेयर 0 लोन पेयर होते हैं तो कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जब कार्बन के 3 बॉन्डेड पेयर 0 लोन पेयर होते हैं तो कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 2 बॉन्डेड पेयर 0 लोन पेयर होते हैं तो कार्बन होता है sp हाइब्रिडाइज्ड। सिमिलरली नाइट्रोजन के लिए ये हो जाता है 3 बॉन्डेड पेयर 1 लोन पेयर पे नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, 2 बॉन्डेड पेयर 2 लोन पेयर पे इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड विद 1 बॉन्डेड पेयर एंड 1 लोन पेयर इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 बॉन्डेड पेयर 1 लोन पेयर है, तो इसका जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसका भी शेप जो होगा वो ऐसे ही होगा। तो व्हेन दीज टू एटम्स, देखो इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस कार्बन का और यहाँ पे नाइट्रोजन का, तो जब मैं इनका ओवरलैपिंग रीजन बनाऊंगा तो इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। अगर मैं इसकी बाउंड्री बनाऊं सिर्फ तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, और इसमें जो न्यूक्लियस है इनके वो बिल्कुल कॉर्नर्स पे बना दो आप।
So this is the overlap between sigma overlap between carbon and nitrogen. This is the final diagram, right? अब पाई बॉन्ड अगर आपको बनाना है तो पाई बॉन्ड तो होता ही एक ही तरह से है ना, पी पी साइडवेज ओवरलैप। तो उसमें हमने किस तरह से बनाया था, वी हैव टू बॉन्डेड एटम न्यूक्लियाई एंड द चार्ज डेंसिटी वुड बी अबव एंड बिलो द एक्सिस लाइक दिस। जो पॉजिटिव चार्ज है ये बेसिकली न्यूक्लियर हैं दोनों के। नाइट्रोजन का वन बॉन्ड नहीं है, वन बॉन्डेड पेयर है। नाइट्रोजन के कितने बॉन्डेड पेयर है, एक ही जगह पे बॉन्ड बना हुआ है ना, ऑल दीज थ्री बॉन्ड्स विल अकाउंट फॉर वन बॉन्डेड पेयर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है जैफा। शेप ऑफ अमोनिया माइन टेट्राहेड्रल, फोर बॉन्डेड पेयर, जीरो लोन पेयर, एंड बॉन्ड एंगल आर 109.5 डिग्रीज। क्लियर है भाई, बढ़ते रहे आगे। कुछ पूछ नहीं रहा आज। नाइट्रोजन का वन बॉन्डेड पेयर कैसे, अच्छा हुजैफा, जस्ट टेल मी वन थिंग, if I just make ammonia molecule, how many bonded pairs are here with the nitrogen atom? अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के कितने बॉन्डेड पेयर हैं? बॉन्डेड पेयर्स, अमोनिया में वी हैव थ्री हाइड्रोजन, वन टू थ्री बॉन्डेड पेयर। और लोन पेयर कितने हैं, वन। दिस हैज थ्री बॉन्डेड पेयर एंड वन लोन पेयर, राइट? नाउ इफ आई जस्ट ड्रॉ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल विथ like this, so first nitrogen has how many bonded pairs? Any number of bonds between two of the bonded atom will be counted as one bonded pair. This is one bonded pair, right? And how many lone pairs must be there on a nitrogen atom? Each nitrogen atom is involving three of its electron in covalent bond. The rest of the other electrons in the valence shell must be acting as a lone pair. So these two nitrogen atom has one bonded pair and one lone pair. Got it? So if a nitrogen is making a triple covalent bond with the carbon atom, so this will be counted as one bonded pair and one lone pair. और जैफा समझ आई बच्चे बात? Okay. Question number 5, you have to draw a shape. You just have to draw a dot and cross diagram and then you have to tell us about the shape of ammonia. I'm leaving this question for you. आप खुद करेंगे। पार्ट 2 में sketch the shape of a sigma in one of the pi bond in the space below. ये रिपीट हो गया आई गेस। हाँ हाँ, ये रिपीट हो गया, ये सेम क्वेश्चन है। अच्छा, जो हमने वहां पे बनाया ना वो बेसिकली हमें इन बॉक्सेस में बनाना था। क्वेश्चन नंबर 6 में यू आर सपोज टू ड्रॉ द शेप ऑफ अ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल। सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल has a band shape with two bonded pair and two one lone pair। ठीक है, इसको हम बैंड शेप कहते हैं। वाटर को हम बैंड भी कहते हैं, नॉन लीनियर भी कहते हैं। दिस इज बैंड शेप। सल्फर ट्राइऑक्साइड में आप इसका शेप यूं भी बना सकते हो, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द शेप ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बिकॉज इट इज अ ट्रिगनल प्लानर। तो ट्रिगनल प्लानर हमने यूं भी प्रैक्टिस किया हुआ है। एंड द बॉन्ड एंगल मस्ट बी इक्वल टू 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल भी बना दिया करो। सल्फर डाइऑक्साइड के 117.5 है। अच्छा, नीचे लिखने हैं वैसे शेप और बॉन्ड एंगल, तो इट्स ओके। 117.5 मार्किंग की में रेंज गिवन होगी, आपने ये वैल्यू याद की हुई है तो ये वैल्यू आपकी रेंज के बीच में ही आई। सल्फर ट्राइऑक्साइड एज अ प्लेनर शेप और ट्रिगनल प्लेनर इज अ फुल नेम। अगर आप सिर्फ प्लेनर भी लिख देंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है। दिस इज ट्रिगनल प्लेनर एंड द बॉन्ड एंगल मस्ट बी ऑफ 120 डिग्री। यस अहमद, बिल्कुल हो सकता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स विद टू डिफरेंट एटम्स। लेकिन अभी जो मॉलिक्यूल बना हुआ था हाइड्रोजन साइनाइड का, उसमें नाइट्रोजन ने तो एक ही के साथ शेयर किया हुआ है ना।
Samahir, you want me to draw the diagram for sp2 and sp3? मतलब you want me to draw the orbital overlap between sp2 sp2 or sp2 sp3? नहीं, लोन पेयर तो बचेगा नाइट्रोजन पे, बिकॉज नाइट्रोजन ओनली विल मेक 3 कोवेलेंट बॉन्ड. तो it has 5 valence electrons. So one of the lone pair has to be remaining on the nitrogen atom, no matter what the compound is. Okay, Samahir is saying that how about if we, let's say, if we have 2 carbon atoms which are bonded to each other, like in case of ethane molecule, both of these carbon atoms have 4 bonded pair and 0 lone pair. So both of these carbon atom must be sp3 hybridized. So if we just want to show the orbital overlap between two of these carbon atoms which are sp3 hybridized, so this each carbon will have hybrid orbital around it like this. तो अब दूसरे कार्बन एटम के साथ जब ये ओवरलैप करेगा तो कोई एक ऑर्बिटल इनमें से ओवरलैप करेगा ना. लेट से हम इस लोब की बात कर लेते हैं. तो जब हम इसका शेप बनाएंगे तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज समथिंग लाइक दिस. देखो sp2 भी हमने ऐसे ही बनाया था, लेकिन sp2 में एक s और एक p था. sp3 जब हम बनाते हैं ना, तो sp3 में एक तो होता है इंडिविजुअल ऑर्बिटल sp3 आप बना दें. अगर मैं सिर्फ sp3 ओवरऑल दिखाऊंगा ना, तो इसमें एक s और 3p है, तो p का पार्ट ज्यादा होगा और s का पार्ट कम होगा. तो sp3 जो है ना, इस तरह से होता है. और अगर मैं दूसरे sp3 के साथ ओवरलैप करता हूं तो उसका शेप भी कुछ ऐसा ही होगा ना. जब ये ओवरलैप करेंगे तो इनके जो न्यूक्लियस हैं, वो ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ब्लैक कलर में. एंड व्हेन दे गोना ओवरलैप विद ईच अदर, दे वुड डू समथिंग लाइक दिस. तो इसका जो ऑर्बिटल ओवरलैप दिखेगा, उसकी जो आउटर बाउंड्री होगी वो कुछ इस तरह से आएगी. तब इसको हम यूं करके बना रहे थे. नहीं, इतना भी नहीं. ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है ना, इनको बस नहीं बनाते हैं हम लोग. और इनके न्यूक्लियस यहाँ कहीं, इनके न्यूक्लियस जो है ना, जो रीजन होता है ना बीच में, यहाँ थोड़ा सा आगे बनाया कर. तो दिस इज sp3 ओवरलैप. बट इफ यू वांट टू ड्रॉ sp3 और sp2 ओवरलैप, तो sp3 तो अभी हमने ये देखा ना, इस तरह का है. sp2 जो होगा वो भी कुछ ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा, बट उसपे p वाला पार्ट इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा, s वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा होगा. इतनी डिटेल में वैसे जाएगा नहीं, बट इन केस अगर आप बनाना सीखना चाह रहे हो, तो वो कुछ तरह से गया. इतना मैस्ड अप बनवाएगा नहीं वो, लेकिन sp3 तक यू कैन एक्सपेक्ट के वो आ सकता है, क्योंकि बुक में डाला हुआ है उसने. समाहिर, यू गॉट माय पॉइंट. sp2 वोंट बी जस्ट एग्जैक्टली सेम शेप. जो होगा ना sp2 का, वो इसमें क्योंकि p वाला पार्ट इतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना sp3 में, क्योंकि 3p है ना उसमें. तो sp2 के ये वाले जो पार्ट है ना, ये थोड़े से बड़े बनेंगे. जो लेफ्ट और राइट पे ये वाले जो पार्ट्स है ना, दिस वुड बी बिगर. sp3 में छोटे, और ये sp2 में थोड़े से बड़े होंगे. थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, ये कर लेना. चलो, ठीक है. अच्छा जी, क्वेश्चन 8 आई एम लीविंग एज योर होमवर्क. बॉन्ड पोलैरिटी पूछा हुआ है. व्हाई अमोनिया इज अ पोलर मॉलिक्यूल. भाई, कोई भी मॉलिक्यूल पोलर क्यों होता है? जब उसमें ओवरऑल डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो होती है. ठीक है. इफ इज सेइंग व्हाई अमोनिया
is a polar molecule because overall dipole moment is not cancel out, क्योंकि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होता है ना, ड्यू टू अनसिमेट्रिक। टेट्राहेड्रल में कैंसिल आउट हो जाती है, पिरामिडल में नहीं होती, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। State one physical property of ammonia, which is caused by its polarity. Due to polarity, ammonia has hydrogen bond between them, है ना। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं? हाई बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का, सॉल्युबिलिटी की हमारी बात हुई थी, सॉल्युबिलिटी की बात हुई थी। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग water has some anomalous properties. Ice is less dense than water. Water has some exceptionally higher boiling point, and water is soluble. Solubility भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। ओके, पीडीपीडी की वजह, पीडीपीडी तो बहुत सारे उसमें होता है ना, तो आई वुड रिकमेंड कि हाइड्रोजन बॉन्ड, वो पूछ नहीं रहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, पोलैरिटी की वजह से पूछा, तो पोलैरिटी तो पीडीपीडी की वजह से ही है ना। ठीक है, पोलैरिटी हाँ सही है, आसान कह सकते हो पीडीपीडी की वजह से, लेकिन यहाँ पे लिखना नहीं था कि किस वजह से। पोलैरिटी की वजह से पीडीपीडी है, पीडीपीडी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो इनकी वजह से मिलके अमोनिया की कुछ ये प्रॉपर्टीज बनेगी। When ammonia gas is mixed with hydrogen chloride, white solid ammonium chloride is formed. State the each type of bond that is present in the formula unit of ammonium chloride. अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता है ना, NH4Cl। दिस इज फॉर 3 मार्क्स। इसमें कौन कौन सी बॉन्डिंग है? कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स, वी हैव 3 कोवलेंट बॉन्ड्स between nitrogen and hydrogen atoms। और क्या है? आयनिक बॉन्ड between ammonium ion and chloride ion। एंड कोऑर्डिनेट या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी तो है ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, डेटिव बॉन्ड between one of the nitrogen and hydrogen। कॉमन तो नहीं है ये क्वेश्चन, वन ऑफ इट्स काइंड है। ठीक है जी, आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर आपके पास जगह हो। डेटिव बॉन्ड क्या होता है अहमद? ऐसा नहीं करो प्लीज। डेटिव बॉन्ड क्या होता है? डेटिव बॉन्ड हमारे पास वो बॉन्ड होता है जिसमें वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स प्रोवाइड्स अ लोन पेयर, कम मतलब टू, both two of the electrons of the bonded atom is provided by one atom only, that was dative bond। हाँ ना, देखो अमोनियम आयन के अंदर ही दो तरह के बॉन्ड है ना, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। और अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में आयनिक बॉन्डिंग है, जब भी तो 3 मार्क्स का है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 9 में इज सेइंग ब्यूटेन है, इथेन है, प्रोपेन है, मतलब हाइड्रोकार्बन की चेन इंक्रीज हो रही है, एमआर इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो कौन सी फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी? आईडी आईडी फोर्सेस, दैट्स व्हाई दे हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। इज जस्ट सेइंग कि सजेस्ट देयर एक्सप्लेनेशन फॉर द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज फ्रॉम मीथेन टू ब्यूटेन तक जा रहे हैं ना, 4 कार्बन एटम्स तक जा रहे हैं, तो more number of electrons in a molecule, so greater instantaneous dipole induced dipole forces, so more energy would be required to break these forces। देखो ना, नंबर of electrons are increasing
from CH4 to C4H10. This is C4H10 actually. So ID forces become more stronger. I would recommend just write ID completely, and so more energy is required. More heat energy is required to break these forces. न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस नहीं भाई, न्यूक्लियर पुल का कोई लेना देना नहीं है आईडी में। उमर न्यूक्लियर पुल, नो 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 न्यूक्लियर पुल। कहाँ से आया तुम्हारे जहन में न्यूक्लियर पुल इस वक्त? बस इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर पोल ये क्या होता है? नहीं। हसान, न्यूक्लियर पुल नहीं हो रहा कुछ, न्यूक्लियर पुल छोड़ दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, आईडी इंक्रीज हो रही है। क्योंकि जब हम चेंज ऑफ स्टेट करवा रहे थे सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल का, तो हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करनी है। हाँ, विद इन ईच है तो सारे कार्बन और हाइड्रोजन ना, इनका आपस में न्यूक्लियर पुल तो इंक्रीज नहीं होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, पार्ट टू से द आइसोमर ऑफ ब्यूटेन टू मिथाइल प्रोपेन। अब एक्चुअली आपको ये पता नहीं है टू मिथाइल प्रोपेन क्या है, बट थोड़ा बहुत शायद आइडिया हो। हमने सरफेस एरिया से भी बॉइलिंग पॉइंट को रिलेट किया था ना, कि टू मिथाइल ब्यूटेन इज अ ब्रांच्ड मॉलिक्यूल एंड सिंपल ब्यूटेन इज अ स्ट्रेट चेन ब्यूटेन। ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज्यादा होती हैं। जैसे ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन इज अ straight chain molecule, so point of contacts are more, so stronger ID। यस, आइसोमर्स हैं ये एक दूसरे के, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन और टू मिथाइल ब्यूटेन आइसोमर्स हैं, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। वैसे इतना ग्रेड 11 में पढ़ के आते तो हो, लेकिन याद नहीं होता ना आप लोगों को। दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, आगे बढ़े। Vesper theory is the electron pair repulsion theory. We know that. It's just saying to complete this table. So four bonded pair, zero lone pair, tetrahedral. Can you give an example of a tetrahedral molecule? Pyramidal is ammonia, and then bent is for water. ठीक है, this is bent non-linear, तो उसको सिर्फ non-linear भी लिख सकते हैं। और तो ये कर लेना कंप्लीट, ठीक है, वेरी इजी। अमोनियम आइन भी लिख सकते हो आसान। अगर अमोनियम लिख रहे हो तो मेक श्योर यू आर आइदर राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम आइन NH4+1 और स्टेटिंग द फुल नेम। आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क ना, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 एज वेल एज क्वेश्चन 12। आई लाइक दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। ठीक है, इसमें बॉन्ड एंगल्स पूछ रहा है इसके एक है। अब आप सल्फर के कितने बॉन्डेड पेयर्स हैं यहाँ पे? Two bonded pairs. And a sulfur atom has 6 electrons in its valence shell. Ramin, homework is very simple. All the questions in your paper 1 and all the questions in your paper 2-5 are by default your homework. सब करना है बच्चे, सब करना है। I was actually expecting you guys to complete all these questions by the weekend, and आप मुझसे आज की क्लास में क्वेश्चंस पूछते, लेकिन आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था।
अब मैं कम थर्सडे वाली क्लास से वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ये सवाल कहाँ से मिलेंगे? गुड क्वेश्चन अहमद। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ से एक्सेस करते हो? पोर्टल से? तो पोर्टल पे ही मिलेंगे ये सवाल वर्कशीट्स। थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो पोर्टल पे, सब कुछ है उसमें। ये क्लास नोट्स कहाँ पे आते हैं? आफ्टर एवरी क्लास। जहाँ पे ये क्लास नोट्स आते हैं वहीं पे वर्कशीट्स भी हैं, पोर्टल पे। सब कुछ पोर्टल पे ही है। अच्छा भाई, बॉन्ड एंगल तो बताओ। पूछा है ए और बी? पूछा ही नहीं है। पूछा हुआ है। नाइट्रोजन एटम का डिटरमिन द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम इज मेकिंग टू बॉन्डेड पेयर्स, इट मींस ईच नाइट्रोजन एटम must have how many lone pair? Around the nitrogen atom there is only one lone pair, and around sulfur atom there are one, two and two lone pairs. बॉन्ड एंगल भी पूछ रहे हैं ना ए और बी के। तो सल्फर के वी हैव टू बॉन्डेड पेयर, टू लोन पेयर। नाइट्रोजन में वी हैव टू बॉन्डेड पेयर, वन लोन पेयर। नहीं सॉरी, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन atom is making two bonded pair only. Nitrogen की bond is the sulfur with the structure as so below, assume all the bonds are shown are single bonds. मतलब single bonds है, bonded pair नहीं है। नाइट्रोजन atom has sulfur forms a compound with S4N4. So nitrogen atom has two bonded pairs. Okay, तो बनाए भी जो अभी अभी हम बात भी कर रहे थे इसकी। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउट ऑफ विच two are only involved in bonding. Sulfur forms a compound S4N4. The structure of S4N4 is shown below. Assume all the bonds shown are single bonds. Why? Okay, चलो, कह रहे तो मान लेते हैं। तो नाइट्रोजन पे एक वन लोन पेयर है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन लोन पेयर तो एक ही है ना, तो एक ही लिखेंगे। सल्फर पे वी हैव फर्स्ट हैव टू लोन पेयर्स। विच बॉन्ड एंगल ए और बी मॉलिक्यूल विल बी स्मॉलर? जिसमें लोन पेयर ज्यादा है वो बॉन्ड एंगल स्मॉलर होगा, तो शुड बी बी। एक्सप्लेन मींस मोर नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अभी कोई मुझसे पूछ रहा था कि नाइट्रोजन अगर थ्री बॉन्ड नहीं बनाए तो क्या होगा? ये लो बेटा, ये होगा। How would we know how many lone pairs are there on the nitrogen atom? Because nitrogen atom is making two covalent bonds और वो कह रहा है single bonds हैं सारे। Nitrogen have 5 valence electrons, so 3 of the electrons are still there on the valence shell, जिसको मैं एक तो लोन पेयर कह दूंगा, लेकिन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको लोन पेयर का नाम नहीं कह सकते, लेकिन वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर है। अब उसने पूछा था लोन पेयर्स बताओ, तो मैंने लोन पेयर बता दी। अब इस पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू बी जो होगी सल्फर की उससे भी छोटी होगी, क्योंकि उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में बाकी। मोर नंबर ऑफ लोन पेयर सल्फर के हैं, जब भी तो बॉन्ड एंगल सल्फर का कम होगा, जो कि ए है ना। ए इज स्मॉलर। अच्छा सॉरी, मैंने बी लिख दिया। ए इज स्मॉलर। ए इज स्मॉलर बिकॉज मोर नंबर ऑफ लोन पेयर्स या मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, हसान वन लोन पेयर को नाइट्रोजन से। How come nitrogen makes 4 bonded pairs in case of ammonia amine? Because nitrogen is actually donating its electron to the hydrogen ion first. Then it is making a covalent bond. Nitrogen is not just like accepting a electron from the hydrogen atom. Hydrogen उसको अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना दे रहा है, तो वो पहले अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहा है, उसके बाद बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, क्वेश्चंस जो है ना वो इसी तरह के चलते रहेंगे अब। आपने पेपर 2 के भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, पेपर 1 के भी करने हैं। मेक श्योर करने हैं आप, भागना नहीं है क्वेश्चन से।
बहुत ज्यादा है भी नहीं पेपर टू के। कुछ क्वेश्चन शायद ऐसे हों जो आप कहो कि अभी पढ़ा ही नहीं है। जैसे मैं मेटालिक बॉन्डिंग कह रहा हूँ ना, तो रिसेंटली उसने पूछी थी मेटालिक बॉन्डिंग, नेम द टाइप ऑफ बॉन्डिंग विद अ सैंपल ऑफ सॉलिड कॉपर, दैट्स अ मेटालिक बॉन्डिंग। लेबल डायग्राम में आपने बस मेटालिक लैटिस बनाना है, ठीक है। इन NH4 अगर अलग से है ना, तो उसमें आयनिक बॉन्डिंग नहीं है। भाई अगर सिर्फ NH4 है, तो उसमें आयनिक बॉन्डिंग थोड़ी ना है। इसमें तो कोवलेंट बॉन्ड है, और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड है। जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता है वो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्डिंग नहीं है। हाँ, NH4Cl अगर है, तो Cl और अमोनिया माइन के बीच में आयनिक बॉन्ड है। विद इन अमोनिया माइन वी हैव नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड एंड डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। Can nitrogen make five covalent bond? No, but period two elements cannot defy octet rule because they cannot expand their octet. Nitrogen cannot make five covalent bond. However, below nitrogen in the same group we have phosphorus. It can make five covalent bond because nitrogen का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल पे एंड हो जाता है। इसके पास डी थोड़ी ना होता है। हाँ, फास्फोरस में 3D खाली पड़ा हुआ था, इसलिए वो ऑक्टेट रूल डिफाई कर रहा था। ठीक है। आई विल गिव यू 1 week टू complete all the questions for this chapter, and after that week we can have a query session if you have questions to ask from this chapter. And of course, after that we will conduct a test for chapter chemical bonding. ठीक है। It's only fair to conduct a test once you are given the time for preparation. I will give you 1 week, and then I will also let you ask the questions if you have. Okay, you can always ask the question on group or DM me to me personally or to my associate teachers, Miss Uswa, Miss Amna. That's up to you, whatever you want. But make sure you have this week to complete all the lectures, all the questions. ठीक है, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे इसका। मीन वाइल फ्रॉम थर्सडेज क्लास वी विल स्टार्ट द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। वी नॉट गोइंग टू स्टार्ट मोल्स राइट अवे, पहले हम स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे, देन वी विल डू रिडॉक्स रिएक्शन, देन वी विल मूव ऑन टू द केमिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है, थोड़े से छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। इफ यू गोइंग टू मिस थर्सडेज क्लास, तो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर एक ही क्लास में खत्म होके एक ही क्लास मतलब शुरू होके खत्म हो जाए। रिडॉक्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है। तो बहुत छोटे से चैप्टर है। रिएक्शन काइनेटिक्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। विद इन 1 क्लास वो टॉपिक खत्म हो जाता है। सही है। फिर एनर्जेटिक्स चलेगा 4 to 5 क्लासेस, फिर इक्विलिब्रियम चलेगा, फिर इनऑर्गेनिक बहुत स्पीड में चलता है। चलो, अहमद गायब होगा टेस्ट से। चले भाई, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, वरना